Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with a new chapter in our science subject, that is chapter number 9, Work and Energy. In this chapter, we will learn about the definition of work. We will learn about the concept of work, and we will also learn about the definition of energy and the concept of energy, along with the different forms of energy. We will learn, and we will also learn renewable and non-renewable sources of energy. So first we will learn about the term work. Now students, you are familiar with the word work, and always you use this word work in your day-to-day life. So आप लोग ये वर्क जो वर्ड है, ये वर्क वर्ड आप रोज सुनते हैं, है ना? तो ये वर्क जो वर्ड है, इससे आप बहुत ही फेमिलियर हो. सो आज हम जो पढ़ेंगे वर्क, वो वर्क इज रिलेटेड टू साइंस. ओके, साइंस में वर्क किसे बोलते हैं, वो उसका डेफिनेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, so let us start with the chapter. Each one of us does a lot of work every day. To do work, we need energy. So energy is the strength with which a work is done. Okay, so you in this paragraph you have just read that you do lot of work every day, isn't it? And to do work you need a strength, isn't it? A strength to do the work. तो आपने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि वर्क क्या है? वर्क मीन्स काम, है ना? तो जो भी काम करने हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, है ना? उसके वर्क को करने के लिए आपको ताकत चाहिए, है ना? तो वर्क इज योर द force applied on a body, and if the body moves then in some direction due to this force, it is called the work. तो आपको मैंने एक डेफिनेशन बोला है, तो ये डेफिनेशन साइंस के टर्म में हम इस डेफिनेशन को इस तरह से बोलते हैं. नाउ अगेन वी विल जस्ट सी व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर वर्क एज पर योर टेक्स्ट बुक. सो see here, it is written, work is said to be done only if force applied on a body moves it in the direction of the force, thus changing its position. तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? Now work is said to be done only if force is applied. Force means कोई ऐसी ताकत को हमें एक बॉडी पर अप्लाई करना है और जिससे कि वो बॉडी मूव हो और अपना डायरेक्शन चेंज कर सके. तो जब ये बॉडी मूव होता है और अपना डायरेक्शन चेंज करता है, दैट टाइम वी से दैट द वर्क इज डन. तो इस स्टेटमेंट को मैं एक एक्टिविटी करके आपको बताती हूँ. Now, just see the statement and just look to the activity what I am doing. Work is said to be done only if force is applied. तो एक force को apply करना पड़ेगा on a body. तो suppose this is a body. Body means कोई thing के ऊपर, okay? Body means things. तो this is a body, and if you apply a force means something you are doing, you are applying force. So suppose I am pushing it, okay? So see, I am pushing the pen. That means I am applying a force, isn't it? Now, as I have pushed the pen, you can see the pen is moving, isn't it? So the body moves it in the direction of the force. Now as I am applying the force this side, the body is also moving
दिस साइड, है ना. नाउ दस चेंजिंग इट्स पोजिशन. तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने पेन को लिया और ये अब रेस्ट पोजिशन में है, और जैसे ही मैंने इसको एक पुश दिया मेरे हाथ से, मैंने एक उसको फोर्स अप्लाई किया, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो बॉडी है, ये जो थिंग है, ये मूव हो गया अपने प्लेस से. यहाँ था, है ना, बॉडी. स्टार्टिंग में जब मैंने रेस्ट में रखा था तो वो बॉडी यहाँ पर था, तो मैंने जैसे ही उसको धक्का मारा, व्हाट हैपेंड, द बॉडी जस्ट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. तो बॉडी क्या हो गया, प्लेस से मूव हो गया, और उसके जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ गया, जिस तरफ मैंने फोर्स को अप्लाई किया, है ना. एंड इट ऑल्सो चेंज इट पोजिशन. सो इट मूव्ड एंड चेंज्ड इट्स पोजीशन. तो ये मूव भी हो गया और अपना पोजीशन उसने चेंज भी कर दिया. एंड नाउ दिस इज सेड दैट वर्क इज डन. जैसे कि आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, ये मूव भी हुआ और अपना पोजीशन भी चेंज कर लिया. ये तब हम कहते हैं साइंस में कि द वर्क इज डन. Okay, so now we will see the different type of examples what is given in your book. Now if you go through this example, then you will clearly understand what do you mean by work. Okay, now moving a cart, that means moving a cart means यदि आप बुलक कार्ट को इमेजिन करो तो क्या होता है बुलक कार्ट. बुलक कार्ट को जैसे ही बुलक उसको पुल करती है, जैसे ही बुलक उसको पुल करती है तो क्या होता है, कार्ट मूव होना शुरू करता है ना. तो सबसे पहले क्या था, बैलगाड़ी वहीं पे खड़ी थी, बुलक कार्ट, है ना. जैसे ही वो काऊ जब उनको मूव कर, जैसे ही बुलक मूव करना शुरू करता है तो क्या होता है, कार्ट विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग, है ना. तो जैसे ही बुलक्स मूव होते हैं, कार्ट ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग. सो एंड बिकॉज ऑफ मूवमेंट इट ऑल्सो चेंजेस इट्स पोजीशन. तो आपको पता है कि जैसे ही बुलक कार्ट में हम बैठते हैं तो जहाँ से हम बैठते हैं हमको दूसरी जगह जाना होता है. तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल व्हाट यू कैन observe that as the bullocks are moving, the cart is also moving and we also change the place, है ना. हम घर से बैठेंगे बुलक कार्ट में तो जाकर पहुंचेंगे जहां हमको जाना था. सो दैट इज योर मूवमेंट. सो दैट टाइम यू से दैट वर्क इज डन. दैट मीन्स bullocks have done some work because it has taken the cart from one place to another place. Now if you see the second example, kicking a football. Now you can see this boy is kicking the football. That means what, the football is moving as well as it is changing its place. Then it is said that work is done. This fellow has done some work. Okay, then picking up a book from the table and keeping it on the shelf. Now see, I am just keeping up this book. Okay, picking up this book. So I have taken this book from here and now I am keeping it here. Okay, so what you have observed, that the book has moved from its place as well as it has changed its position. Okay, so that means I did some work. मैंने कुछ काम किया. मैंने क्या काम किया, बुक को उठाया, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया. Okay, so this is also said to be a work done. Then swimming is another action where you can find that the person who swims, he also moves and also changes its position. Then hitting a ball with a bat. As you hit the ball with a bat, the ball will change its place as well as it will start moving, isn't it? So these are all the examples which tell you that the work is done. So work done का यही definition आपको रिमाइंड करना है कि if force is applied on a body, the body moves it in the direction of the force, thus changing its position. So जब भी आपको वर्क का डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको ये डेफिनेशन आपको बोलना है, ठीक है. So this definition is according to your scientific definition. Okay,
Now let us see when work is not done. तो आपने ये जो examples देखे थे इसमें क्या देखा आपने, हर example में you have done some work or the cart has done some work or the other person has done some work. But some of the examples are given here where you can find that the work is not done. Okay, so some of the examples of work not done are as follows. So which are the example you can say that the work is not done? Okay, so let us see. Lifting a basket and putting it back on its position. So एक बास्केट को, अब देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज बास्केट नहीं है मेरे पास, तो आई हैव टेकन दिस डस्टर. ओके, सो व्हाट आई डिड, I just kept the duster over here and just lifted it, and I have again kept the duster on the same position. तो आप देख पा रहे ऐसे मैंने उठाया और उसे सेम पोजीशन में रख दिया. ओके, सो यू कैन सी दैट देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन. तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि मैंने डस्टर का जो पोजीशन था वो पोजीशन को मैंने चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है. तो जैसे कि आपको एज पर योर डेफिनेशन यू नो दैट इट द वर्क डन इज the work is done only if there is change in position. So as you can see the duster has not changed its position, so we can say that we have not done any work. तो डस्टर ने पोजीशन कोई भी चेंज नहीं किया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो काम हमने किया है that work is not done. So see here, lifting a basket and putting it back on its position. So here you can say that work has not been done. Now pushing something that doesn't move like a heavy box or a wall. Now if you just push the wall, आप अपने दीवारों को यदि धक्का मारोगे इस तरह से, so what will happen? The wall will never move, है ना. वॉल जो है, दीवारें जो है वो कभी क्या होगी, मूव ही नहीं होगी. तो दैट मीन्स वर्क इज नॉट डन. आप कितना भी फोर्स लगाओ दीवार विल नॉट मूव. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क विच हैज बीन नॉट डन. ओके, सो पुशिंग समथिंग दैट डज नॉट मूव like a heavy box or a wall is again the example of the work that is not done. तो आप यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पोजीशन यदि चेंज नहीं हुआ होगा या मूवमेंट नहीं हुआ होगा तो दोनों केसेस में क्या होता है, वर्क इज नॉट डन. वर्क डन करने के लिए आपको मूवमेंट की भी ज़रूरत है, साथ में आपको पोजीशन चेंज होने की भी ज़रूरत है. ओके, देन वी विल जस्ट सी द थर्ड एग्जाम्पल, रीडिंग ए बुक. नाउ यू कैन सी दिस गर्ल इज रीडिंग अ बुक. So the book is not moving, isn't it? And it has not changed its position as well. ओके, तो इसने पोजीशन में बुक का चेंज नहीं हुआ है और ये मूवमेंट भी नहीं हुआ है. तो इसीलिए दिस गर्ल हु इज रीडिंग हैज नॉट डन एनी वर्क. ओके, नाउ सिंगिंग इज ऑल्सो एक्टिविटी इन साइंस concept. Here singing is also a work which is not done. Singing में भी क्या होता है, वो जो माइक हम लोग यदि बैठ कर माइक लेके करते हैं तो क्या होता है, माइक का मूवमेंट नहीं है और साथ में पोजीशन भी आपका चेंज नहीं होता है. इसीलिए सिंगिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्क विच इज नॉट डन. So we have just learned about the definition of work and we have seen how we can say the work is done and how we can say the work is not done. So many examples we have seen. Now we will come to the next word, that is energy. Now energy means the strength or the ability or the capacity to do work. ओके, सो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ताकत होती है जिससे कि हम एक काम को कर सकते हैं, है ना. सो इफ यू हैव सीन दिस पिक्चर, नाउ दिस मैन wants to move this table. Okay, so what he needs his energy to push this table, isn't it? उसको ताकत चाहिए. ताकत होने से ही वो इस बॉक्स को हटा सकता है और एज द बॉक्स विल मूव देन ओनली ही हैज़ डन सम वर्क. तो ही नीड्स एनर्जी
to move this box and then he will do some work. Okay, तो उसको कुछ ताकत चाहिए जिसकी वजह से वो ये टेबल को मूव कर सकता है, और जैसे ही टेबल मूव होगा तब हम कह सकते हैं कि इस पर्सन ने कोई काम किया है. ठीक है. नाउ इफ यू लुक टू दिस हियर, the person is just pushing the wall. Now from this example you can see that the wall will never move, isn't it? But he will use his energy, है ना. इसको ताकत चाहिए, but this wall will never move. So with his energy he will push this wall, but the wall will not move. So we can say that he is using an energy, but he is not doing any work. Okay, so energy is nothing but it is the strength, or it is the ability, or it is the capability, or it is the capacity to do some work. So the definition is given here. Energy is defined as the ability to do work. It provides you the force, means ताकत, जिससे कि आप force लगा सकते हो, with which you can do work. Okay, so energy definition is here. So you can write the energy definition from this line. Now you know that we as a human being, if we want energy, आपको यदि ताकत चाहिए, आपको यदि strength चाहिए, so what you should do? You need food, isn't it? So in order to have energy you have to eat food. आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपको खाना खाना है. खाना आप जिस अच्छी तरह से खाओगे, आप हेल्दी फूड खाओगे, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एनर्जी. यू विल गेट एनर्जी टू डू work. Okay, so the main thing is the food is giving energy to do work. Now as you know that we get food from, आपको food कहाँ से मिलता है? food आपको plants और animals से मिलता है. अब plants कैसे food बनाते हैं? plants sunlight के help से food बनाते हैं, ये भी आपको पता है ना. Now ultimately what happens? Ultimately sun is the main source of energy. So the main source of energy is sun, because sun is providing sunlight, and with the help of this sunlight the plants prepare food, and the food we eat to get energy. So sun is the main source of energy. Plants use sunlight from light energy from sun rays to grow and produce food for us. We get energy by eating plant and animal products. Plant products are fruits, vegetables and cereals. Animal products are milk, cheese and curd, eggs and meat. So from this paragraph you can say that sun is the main source of energy, because if sun is not there, then the plants will not be able to make food, and if plants are not able to make food, we will not get food, and as we will not get food, we will not get energy, and if we are not getting energy, then we cannot do any work. Okay, so you can see sun is the main source of energy. Okay, now why you want energy? You want energy to do many work. Now you can see different types of work you do if you have energy. To play outdoor games, आपको outdoor games फुटबॉल या क्रिकेट खेलना है तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना. If you are weak you cannot play. Then to clean our rooms, so if you want to clean your rooms, then also you need your strength, isn't it, capacity. Then to walk, to run, to jump and to swim, you also need energy. तो आपको चलने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी आपको किससे मिलता है? फूड से. Okay, so you can see all
the work that is there, or all the work that you do in your everyday life, आप अपने डेली एक्टिविटीज जो भी करते हो, फॉर दैट यू नीड एनर्जी. ओके, सो एनर्जी इज ऑल्सो वेरी important along with work. Now we will learn about different forms of energy or different types of energy. Okay, so different types of energy हमको learn करना है, क्योंकि हम इससे पता चल सकता है कि हम different types of energy कहाँ से हमें मिलता है and how they are useful to us. Okay, so we will just see what are the different forms of energy and why this energy is useful to us. Now students, you can see that I have written the different forms of energy. Now in this chapter you are going to learn about 8 different forms of energy. तो यहाँ पे 8 मैंने forms लिखे हैं. So first is your mechanical energy, then heat energy, light energy, magnetic energy, sound energy, solar energy, wind energy and electrical energy. Okay, so these are the different forms of energy that you are going to learn in this chapter. Okay, so one by one we will just discuss about these forms of energy. Now mechanical energy is the energy that is possessed by any moving object. Okay, so any moving object is associated with the motion and position of the body is called the mechanical energy. So you have the definition of mechanical energy in your textbook. So let us see the definition. The energy possessed by an object due to its position or motion is called mechanical energy. Okay, so we'll just discuss about the meaning of this statement. Now you know that all the objects move. Okay, so your body, any machine or any object, if you apply force, that will move. Okay, so if movement is there and if change in position of that object is there, that means it is possessing the mechanical energy. So mechanical energy जो है वो आपके body parts और machine दोनों ये mechanical energy को use करते हैं. So let us write that machine and body parts uses mechanical energy. Okay, machine and body part uses mechanical energy. Okay, so as you know, we use machine for various activities. machines को हम अलग अलग वर्क के लिए यूज करते हैं. सो यू नो दैट these machines move and they also change its position. Then body parts, you use your body parts. जो भी body parts आपके पास है, every body part is used for different types of activity. Okay, so as you know that all the body parts also move and it also changes its position while doing the activity. Okay, so these are the things which uses your mechanical energy. तो mechanical energy कौन use करता है? machine और body parts. Okay, and why they are used? Because as you know, you have to do work with this machine and body part, so they need energy, and that energy is your mechanical energy. Okay, and this mechanical energy is divided into 2 types. Now this mechanical energy is divided into 2 types. First is potential energy and second is your kinetic energy. So what is potential energy? Potential energy is the energy that the body possessed due to its position, or when the body is at rest,
that time it is possessing the potential energy or the stored energy. Stored energy is called the potential energy. So let us write here stored energy. Okay, stored energy is the potential energy. And now what about kinetic energy? Kinetic energy is the energy that the body possesses when it starts moving. Okay, so it is this is a stored energy, this is a moving energy. Okay, moving energy. So we'll just have the look for these two energies with an example. अब देखिए इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. तो आप देख सकते हो, ये देखिए, ये मैंने एक बिल्डिंग बना लिया है. ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बिल्डिंग बना लिया है. ये आपका एक बिल्डिंग है. ठीक है, तो मेरा एक रफ डायग्राम है, जस्ट आई एम मेकिंग इट. ओके, सो दिस इज योर बिल्डिंग. नाउ इफ यू कीप ए बॉल हियर, आपने यहाँ पे एक बॉल रखा है. ठीक है, टेरेस के ऊपर एक बॉल रख दिया है आपने. ओके, तो अब जो बॉल है वो किधर है? बॉल टेरेस के ऊपर रखा हुआ है एंड इट इज एट वन पोजिशन. वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में हमने बॉल को रखा है. ठीक है, तो अब ये जो बॉल है इसमें भी कोई एनर्जी होगा, है ना? तो ये एनर्जी इज योर पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दिस इज अ स्टोर्ड एनर्जी. तो जब वो अपने एक पोजीशन में रहता है, वो पोजीशन में उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी रहता है. ठीक है, तो दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड योर पोटेंशियल एनर्जी. नाउ एज यू जस्ट ड्रॉप दिस बॉल, आप ये बॉल को नीचे की तरफ आप इसको ड्रॉप करते हो, तो ये क्या होगा? ये जो बॉल है ये धीरे धीरे क्या होगा? नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा. तो आप देखिए यहाँ पे एक बार बॉल आ रहा है, फिर यहाँ पे बॉल आ गया. ठीक है, तो वो ग्राउंड में आपका जो है बॉल नीचे आकर गिर गया है. ठीक है, तो जब बॉल, नाउ सी हियर, I'll just mark it with the red color. तो ये देखिए, ये बॉल जब ऐसे गिर रहा है, ठीक है, सो एज इट इज कमिंग डाउन एंड एज इट इज ऑन द ग्राउंड, नाउ एज सून एज इट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, इसको जब हम ड्रॉप करते हैं नीचे, उस समय क्या होता है? ये बॉल का क्या होता है? मोशन, मूवमेंट होना शुरू होता है ना? ये मूवमेंट हो रहा है इसका. देखिए, तो मूवमेंट जब होता है, दैट मीन्स नाउ इट इज पोजेसिंग योर काइनेटिक एनर्जी. तो जैसे ही वो ऊपर था, ये जो एक पोजीशन में बॉल को रखा गया था, उस समय उसका एनर्जी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी. एंड एज सुन एज इट इज ड्रॉप डाउन, एज सुन एज इट इज कमिंग टूवर्ड्स ग्राउंड, तो क्या हो रहा है? इसमें एक मोशन वाला एनर्जी आ रहा है. ठीक है, मूविंग एनर्जी. सो दैट मूविंग एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो जैसे ये ब्लू कलर, तभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, और जैसे ही वो नीचे 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 आ रहा है, तो उसके पास कौन सा एनर्जी हो गया है? काइनेटिक एनर्जी. नाउ एज इट कम्स डाउन टू द ग्राउंड एंड एज इट फॉल्स एंड अगेन it has stopped, isn't it? The movement has stopped. यहाँ पर आके उसका मूवमेंट स्टॉप हो गया. एज सोन एज इट्स मूवमेंट हैज स्टॉप्ड, दैट मीन्स नाउ इट इज पोजेसिंग कौन सा एनर्जी? नाउ इट इज पोजेसिंग योर पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे ही वो ऊपर था पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही ग्राउंड में आके भी वो उसका ये यहाँ पे कौन सा एनर्जी पोजेस हो गया? ये पोटेंशियल एनर्जी पोजेस हो गया, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग नाउ. नाउ एज यू कैन सी हियर इट इज मूविंग, सो इट इज पोजेसिंग काइनेटिक energy. So mechanical energy is divided into two, that is potential energy and kinetic energy. Okay, so definition is given in your textbook. I am just marking it for you. Now you can see the definition given here. The energy possessed by body due to its position is called as potential energy. It is a stored energy of an object. Okay, so as you can see, a stone kept on the top of a building has potential energy. If it falls, the potential energy is converted into
kinetic energy. The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Now various examples are given for your kinetic energy. A moving ball, so this is one example. Then flowing water, you can see the flowing water, that is also a example of kinetic energy. So this is the first form of energy, that is mechanical energy. Okay, so let us move to the next one. Now second form of energy is heat energy and third is light energy. Now both heat and light we get from sun. Okay, so heat energy and light energy both we get from sun, and we know that the heat energy means the energy which is responsible for sensation of heat. हीट मतलब आपको पता है गर्मी, एंड लाइट मीन्स योर ब्राइटनेस. ओके, सो जो हीट एनर्जी और जो लाइट एनर्जी हमको सन से मिलता है, दिस कैन बी ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर our useful purposes. Okay, many purposes we use this heat energy and light energy. तो heat energy हम किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको पता है कि हमको सन से जब हीट मिलता है, so we are using all the appliances which can utilize solar energy. सोलार एनर्जी, हीट एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमने आजकल सोलार अप्लायंसेस को यूज करना शुरू किया है ना. तो आपने देखा होगा पहले आपके प्रीवियस क्लास में सोलार कुकर वी आर यूजिंग, सोलार पैनल्स फॉर हीटिंग वाटर एंड एवरीथिंग वी आर यूजिंग, इजंट इट. देन दिस लाइट एनर्जी is also very useful, and this also we get it from sun. Okay, so you can see in the paragraph in your book there are so many uses given. देखिए हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सन वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन. द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हीट इज नोन एज हीट एनर्जी. So the definition is written here, and you know that heat energy is used for cooking purpose. Then many things which burns, बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, बर्न होता है, उस समय भी हमको हीट मिलता है, एंड दैट वी कैन यूज़ फॉर कुकिंग, देन रनिंग द स्टीम इंजिन्स, एंड देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर द कॉमन यूज ऑफ हीट एनर्जी. Now you can see the use of light energy as well. So the use of light energy is light is a form of energy. It makes things visible to us, and our sources of light energy include bulbs, candles and tube lights. So light energy is used for your the sun is giving you light, and you can say that everything is visible because of your sunlight. तो जो लाइट एनर्जी हमको सन से मिलता है, उससे क्या होता है, हमको पूरे जगह को देखने के लिए वो यूज़ होता है, जैसे कि हर एक जगह विजिबल हो जाता है ना. नाइट टाइम में वी कैन नॉट सी एनीथिंग, बट डे टाइम इज़ अ टाइम वेयर यू एवरीथिंग इज़ विजिबल टू यू. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ योर सनलाइट, एंड द light energy that are man-made like bulbs, candles and tube lights, these are also useful for making visibility. Okay, so bulb, candles and tube light ये man-made light energy है, जो कि हमको हर एक चीज़ को क्लियर ब्राइटली देखने के लिए काम में आता है. ठीक है, now we will move to the next form of energy. Now the next form of energy is magnetic energy. This energy is exerted by magnets. Magnet के थ्रू जो हमें एनर्जी मिलता है, that is called as the magnetic energy. And why this energy we are using? Because whenever we need the magnetic energy to move very heavy loads, that is why we are using this magnetic energy. No, so for this we just we have to read the paragraph, then you will come to know. So you can see the paragraph on magnetic energy. Magnet exert force on other magnets and iron objects. So this magnetic energy we get from magnets. Okay,
मैग्नेट से हमको ये एनर्जी मिलता है. दिस फोर्स इज ड्यू टू एनर्जी ऑफ मैग्नेट नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. This form is used for various purposes like lifting heavy iron object using a strong magnet, separation of iron object from other metallic objects, and running electromagnetic trains. So this magnetic energy is usually used by the magnets, okay, so to lift heavy iron object. सो आपने जब बिल्डिंग बनता है उस समय आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो लिफ्टिंग वाली गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसमें बड़े बड़े मैग्नेट लगे रहते हैं. ओके, दैट मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द हेवी आयरन ऑब्जेक्ट. Okay, and also to separate iron object from metallic object. And this magnetic energy is also utilized by this magnetic trains. जो बुलेट ट्रेन्स आप देखते हो वो बुलेट ट्रेन्स कैसे बहुत स्पीड में जाता है ना. तो ये जो ट्रैक्स रहते हैं वो भी मैग्नेट स्टील के रहते हैं और इनके जो व्हील्स रहते हैं इसमें मैग्नेट के इफेक्ट रहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट रहते हैं. तो इसके वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन स्पीड लेता है. ओके, सो मैग्नेटिक एनर्जी इज यूज्ड बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स टू रन ऑन द ट्रैक्स. ओके, सो we have the concept of magnetic energy from this paragraph. Now we will go for the next energy, that is the sound energy. So you have gone through mechanical energy, heat energy, light energy, magnetic energy, and this is the fifth one, that is the sound energy. Now this also have a paragraph on sound energy where sound usually we get from the vibrations. Sound हमें कैसे मिलता है? Vibrations of objects से. Vibration of objects. Okay, so जैसे ही vibration होता है that time we are getting sound. So let me show you. Now see, I have just taken this pen. Okay, now as you can see I am just doing like this. So here there is a vibration, isn't it? So as I am vibrating this object, so see you can get the sound. Okay, so this is called the sound energy, and usually this vibrating or the sound energy is used to produce the sound by various musical instruments. Okay, so let us just read the paragraph. Sound is a form of energy which is produced as a result of vibration of object. This vibration travel through air and reach our ear, producing the sensation of hearing. Sound energy is produced by radios, players, then musical instruments like sitar, guitar and piano. So as you know, this sitar, it is having the steel wires. So जैसे you pluck that wire, it start vibrating. ओके, तो ये जो सितार होते हैं इसमें स्टील के वायर्स रहते हैं, आपने देखा होगा गिटार में भी होता है. तो दैट वायर एज यू प्लक, उसको जैसे ही हम अपने फिंगर से उसको ऐसे प्लक करते हैं, सो व्हाट हैपन्स, द वायर स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड दिस वाइब्रेशन गिव्स यू द साउंड. Okay, so that is your sound energy and usually used by the radios, music players, musical instruments like sitar, guitar and piano. Okay, so that we get a soothing music, isn't it? So this is your fifth form of energy. Now we will go for the next one, that is solar energy. Now you know everybody that solar energy we get from sun, and if solar energy is not there, our life will not exist, isn't it? So the vast amount of energy obtained from sun is solar energy, and solar energy is required for what? For the plants to prepare food, and from sun we also get heat and light. Now the next one is wind energy. This is also very familiar to you. Wind energy we get from wind. Okay, so wind is nothing but the moving air.
सो जो हमको हवा चलती है उसे हम विंड कहते हैं एंड वी गेट विंड एनर्जी फ्रॉम द विंड इटसेल्फ. ओके, सो इट इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो विंड एनर्जी क्या होता है? इट इज़ ए नेचुरल सोर्स, हमें बनाना नहीं पड़ता है उसको. दैट इज़ नॉट मैन मेड, दैट इज़ अ नेचुरल source. And what is the use of this wind energy? What we do with this wind energy? We just make the setting of this windmills, and this energy of wind is utilized by these windmills to generate electricity. तो ये जो विंडमिल होते हैं ये क्या करते हैं? विंड के वजह से ये गोल गोल घूमते रहते हैं, और गोल घूमने से क्या होता है? एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, तो ये जो जोर से घूमता है इसके साथ एक टरबाइन इन लोग फिक्स करते हैं, और वो टरबाइन से क्या होता है? वी गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ गिविंग अस energy. Okay, and next one is electrical energy. It is the last form of energy that we have to study, that is electrical energy. Now as you know, electrical energy is the energy we need to run the electrical appliances. तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी हमें विंड एनर्जी से मिलता है, you know that, and this will be useful for to run the electrical appliances. The tidal energy is also useful for giving us electricity. Tidal means जो tides रहते हैं ना, उससे भी हमें electricity मिलता है. Okay, so tidal energy is also one of the form of energy that gives you electricity. So electrical energy is the form of energy which can run the electrical appliances. So you can see so many appliances here, that is washing machine, then vacuum cleaner, then your television, then air conditioner. All these appliances need electricity to learn. Along with that, your tube lights, your bulb, your fans, everything need electricity. So electrical energy is another very important form of energy which makes your electrical appliances run, okay, or to work. So now we will have a look for the sources of energy. Okay, now the next topic is about sources of energy. आपको जो energy, आपने इतने forms पढ़े energy के, 8 forms you have studied now. So these all energies, where from you get? Okay, so the energy from where you get is called as the source of energy. Now this source of energy is divided into 2. Okay, so 2 types of sources are there. Now sources of energy is divided into 2 types. One is renewable source and next one is non-renewable source. Okay, so from the word renewable source, this means renew means जो source of energy हम लोग जिस source से हमको energy मिल रहा है, the source from which we are getting energy is the source which never gets exhausted, which never gets exhausted. तो ये रिन्यूएबल जो सोर्स है, ये सोर्सेज जो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, these sources never gets exhausted means कभी वो ख़त्म नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो सोर्सेज है उसे हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज. मीन्स जब हम इसका यूज़ करते हैं उसके बाद हमें फिर चाहिए होगा तो हमें इजीली वो मिल जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ योर रीन्यूएबल सोर्स. एंड नेक्स्ट वन इज नॉन रीन्यूएबल सोर्स. तो फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू कैन से दैट इट इज़ अपोजिट टू दिस. ओके, सो रीन्यूएबल में कैसे हमको वो सोर्स से एनर्जी मिलता है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है हम फिर से वो सोर्स से वापस एनर्जी हम लोग ले सकते हैं. बट नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज फ्रॉम विच इफ़ वी
take up all the energy that gets exhausted. तो जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आता है उसमें क्या होता है, जैसे कि हम एनर्जी उसमें से ले रहे हैं और जैसे हमारा एनर्जी ख़त्म होता है तो हम फिर से वहाँ पर जाके एनर्जी नहीं ले सकते हैं. सो विल जस्ट सी द एग्जाम्पल्स एंड यू विल नो हाउ we can differentiate between these two sources. Okay, so let us see what are renewable sources. Now see the renewable sources. First one is sun. अभी जो सन होता है उसमें से हमको क्या क्या एनर्जी मिल सकता है, आपने 8 फॉर्म्स पढ़े हैं, है ना. 8 फॉर्म्स में आपको सन में से क्या क्या एनर्जी मिल सकता है, आपको सोलार एनर्जी मिल सकता है. यू कैन गेट द सोलार एनर्जी, यू कैन गेट हीट एनर्जी, you can get light energy. Okay, so from sun you can get solar energy, heat energy and light energy. तो ये तीनों जो forms of energy you can get from sun. Okay, so as you know that if this energy whatever is required, if these energies are finished, आपने ये सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया है, आपको फिर से चाहिए होगा तो आप अगेन सन के से इस एनर्जी को वापस ले सकते हैं, है ना. बिकॉज सन इज द सोर्स विच नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड. सन कभी भी ख़त्म, सन का जो हीट है, जो लाइट है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है. इसीलिए हम इस सन से एनर्जीज को लेते हैं और दिस एनर्जीज बिकम्स योर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ओके, देन विंड एनर्जी, अगेन जो हवा से हमको विंड एनर्जी मिलता है जिससे कि हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. हमने देखा है ये चीज़, है ना. तो क्या होता है, विंड जो है वो विंड मिल्स को मूव करता है एंड फ्रॉम दैट वी गेट इलेक्ट्रिसिटी. सो विंड, दिस सोर्स विल नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड, विल नेवर गेट फिनिश्ड. ये विंड जो है, इसका ये जो विंड है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, है ना. तो हम जितना चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं. सो अगेन दिस बिकम्स अ रिन्यूएबल सोर्स फॉर यू. देन हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी इज अनदर सोर्स. हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर. ओके, सो ये जो वाटर है, वाटर हमें कहाँ मिलता है, वी हैव रिवर, वी हैव डैम्स, है ना, वी हैव सी, सो वी गेट वाटर, isn't it? And this water that is hydro never gets finished off, exhaust नहीं होगा. पूरे जो यूनिवर्स है, पूरे जो अर्थ में, ये never it will get exhausted, isn't it? So we can easily get this hydro energy and that is also renewable. Okay, then we have tidal energy. Tides, जो हमारे सी में टाइड्स आते हैं, जो वेव्स आते हैं, वेव्स आते हैं, देखा है आपने. तो टाइड मीन्स लो टाइड, हाई टाइड. तो ये टाइड्स वेव्स से होता है. तो ये जो वेव्स हैं ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे. तो हमको टाइडल एनर्जी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं. सो टाइडल एनर्जी ऑल्सो नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड. सो दिस इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल सोर्सेस. ओके, तो रीन्यूएबल मीन्स बार बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं. रीन्यूएबल, बार बार नया नया हम लोग एनर्जी इनसे ले सकते हैं. ठीक है, तो कौन किससे किससे ले सकते हैं, सन से ले सकते हैं, विंड से ले सकते हैं, वाटर से ले सकते हैं, टाइड से ले सकते हैं. ओके, सो दीज ऑल एनर्जीज आर रिन्यूएबल सोर्सेस. So see, I have given you solar energy, heat energy, light energy from sun, which is a renewable source. Wind from wind, wind energy from wind, which is also a renewable source, and tidal and hydro energy from water. So this is also a renewable source. Okay, so these sources never gets exhausted. कभी भी finish नहीं होगा. ठीक है, जब तक हमारा अर्थ है तब तक ये सब चीज़ें हमें मिलती रहेगी. सो दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेस. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस. तो ये सोर्सेस जो है ये जब एग्जॉस्ट हो जाएगी तो वापस हमें मिलने वाले नहीं हैं. सो इफ यू कंसिडर दिस कोल, देन पेट्रोल, देन डीजल, देन नेचुरल गैस, okay,
all these sources, coal, petrol, diesel, natural gas, ये सभी चीज़ें you are getting under the ground. Okay, so these things will get exhausted. तो ये जो चीज़ें हैं, जो कोयला है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो नेचुरल गैस है, और द क्रूड ऑयल इज़ देयर, क्रूड ऑयल, केरोसिन वगैरह जो है, दीज ऑयल एंड gases will get exhausted. तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ कर रहे, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल सब ख़त्म हो रहे, तो ये फिर से हमको ग्राउंड में नहीं मिलता है. इनको ग्राउंड में इनको प्रोड्यूस होने के लिए बहुत टाइम लगता है. thousands of years it takes to form this crude oil और natural gas. thousands of year लेता है इन सबको ग्राउंड में फिर से प्रोड्यूस होने के लिए. लेकिन हम लोग यदि इसको जल्दी यूज़ कर लेंगे, सो वी विल नॉट गेट दिस थिंग अगेन. ओके, सो दैट इज़ वाई दे आर said as non-renewable sources. So coal, petrol, diesel, natural gas, crude oil, they get exhausted when they are in high demand. तो यह आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये naturally ये सब चीज़ें क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे. So you will never get again. So it is said as non-renewable sources. Okay, so this is the difference between renewable sources and non-renewable sources. Now in your textbook a diagram is given to you, renewable energy sources. So as you can see, the sun, the wind, the water, the tidal wave, everything we can be used again and again to get the use of these energies. Okay, so these are your renewable energy sources, and you can see here this oil, coal, natural gas, all these things if we use again and again, this will get exhausted. Okay, so they are present in limited amount in our earth. Okay, and it should be used wisely. Okay, so you have been given with the pictures, and from this picture you can have a good concept of renewable energy source and non-renewable energy source. Okay, so with this we complete off with the chapter work and energy. In this chapter, so we have learned about work, we have learned about energy, we have learned about different, that is 8 forms of energy. We have also learned renewable and non-renewable sources of energy in this chapter. Please go through all this topic, and whatever I have given you in writing or whatever I have shown you in writing, just go through that things so that it becomes easy for you to learn. Okay, learn the different spellings which are new to you, and try to give the answers of your own. Thank you.